Hello everyone, myself Prem Kumar, and currently I'm the students of IIT Madras PS degree program, and right now I'm working on a design thinking project, which is a course of this degree, and we have a problem statement based on the school management system or a learning management system. So we have some user persona, and based on that, I have a student. Ms. Sanjita Sharma here, and I would like to ask some questions, which basically based on some problem statement, problem which have faced during her school life. So hope we'll get the answer based on that. Yeah, I would like to ask some questions here. So yeah, the first question is, how do you currently keep track of the assignments, deadlines, and the attendance right now in the school? Actually, I prefer my notebook, but sometimes I use my phone to set reminders for everything, and but it's actually very hard to manage everything online. Yeah, definitely. If you can't get notification and other stuffs, it's really hard to manage these things, especially the deadlines of the assignments. Even we are facing it in the college as well. So yeah, the second question. Move on to the what are the challenges do you face in the submitting assignments or attending the live class right now in the school? Sometimes I forgot my deadline to submit the project, and it's very hard to submit it online also. And when the internet is slow, attending a live lecture becomes a very major problem. Yeah, definitely. If you could get the recorded lectures, it will be easy for you to catch up with the lectures. Yeah, we'll look into it. And the next one is, how do you prefer to the communicate with your teachers for the doubt clarifications? Actually, I prefer messaging them or sending an email, but sometimes it take a while to get a response from the other side. So I would suggest a chat feature would be a faster for this. Definitely. If we get the integrate the chat features in our app, yeah, it will be easy for you to interact with the teachers directly. Uh, so yeah, the next question is, what would make it easier for you to manage your schoolwork digitally? Would you think it is easy for you? Yeah, I would like a platform which keeps the track of all my data, all my assignments, all my deadline, class schedule on one place so that I would be able to stay organized. Definitely, it is very easy for you. So yeah, I would like to ask one more question here. How important it is for you to have the access to the recorded lectures and the live class notification, as we earlier discussed it in the interview? Actually, it's very important because whenever I miss the class, I would catch up by watching the recordings, and getting the live class notification will help me to stay on a schedule. Yeah, it's really important for you. I can understand. So, one more question here is, what are the features would you like to see in a system design to help you to manage your studies right now? I would prefer a reminder for my upcoming assignments or projects, and will stay organized for this. And by seeing the live notification from my for my exams or classes, it would be easier for me to handle it. Yeah, definitely. I can understand it. Even I face the same problems in the school right now. Sorry, in the past. So, yeah, I can understand it very well. So, move on to the next question. I know it's very hectic, and the questions are getting, numbers are getting increased. So, yeah, the next one is, how often do you face difficulties in the managing multiple subjects and their deadlines? Actually, I face difficulty almost every week because it's very hard to manage the thing online. And whenever so many deadlines are coming close, it would very difficult. I'm Yeah, I can understand it. We will definitely try to solve these problems in our app. So yeah, this is the last question I would definitely ask you, which is, what does your ideal experience of learning and engaging with the teachers online look like? I would prefer something, a system which will keep records of all my assignments, the data, and the upcoming notification for my exams, and I would able to interact with our teachers properly. Yeah, I can understand it.
Yeah, thank you, Sanchita. It really nice to have a chat with you. So yeah, that's it, everyone. This is the persona from the students' perspective. We have also three more personas. Our team is working on it, and will attach the interview here for the different personas. Like we have three more personas: the principal, the clerk, and the teachers. So we will look all the problems based on their perspective, and will definitely try to solve these problems in our design thinking projects. So yeah, thank you, Sanchita. Thank you for joining us. Thank you so much. For my case, I have selected Aarti ma'am, who is currently a clerk in the Government College of Lucknow and she is working from the past 6 years. So मैम पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि एज ए क्लर्क आप अटेंडेंस और लीव रिक्वेस्ट जो स्टाफ्स की होती हैं उसको आप कैसे जी मैनेज करती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, ये चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सर एक्चुअली अटेंडेंस का क्या है कि जैसे टीचर्स जब छुट्टियां लेते हैं तो कई टाइप की छुट्टियां होती हैं, जैसे सीएल हो गई, ईएल हो गई। सीएल तो ओकेजनली लेती हैं, कभी पहले से प्लान रहता है कि हमें कल छुट्टी लेनी है तो वो लोग एप्लीकेशन दे के जाती हैं। और कभी कभी अचानक से होता है कि मॉर्निंग में तबीयत खराब हो गई या तो वो सिर्फ फ़ोन करके ही हमें इन्फॉर्म कर पाते हैं कि हमें छुट्टी लेनी है। फिर उनको अटेंडेंस रजिस्टर पे सीएल चढ़ा के ही मैनेज होता है, फिर वो अगले दिन आते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो उसमें पेपर वर्क ही हमारे पास हो पाता है। और कभी-कभी क्या होता है, सीएल लेने के बाद मान लिया तबीयत ही खराब होती है, तो वो उसको मेडिकल में कन्वर्ट करने लगते हैं। मतलब 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, ओके। फिर वो मेडिकल में अप्लाई हो जाता है। तो मेडिकल का थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, फिर वो अपना मेडिकल भेजते हैं, फिर वो हम लोग प्रिंसिपल से अप्रूव करवा के वो हम अपने अधिकारी लेवल तक भेजते हैं, डीआईएस ऑफिस जाता है, उसमें कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है और पेपर वर्क थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। फिर जब वो लोग ठीक होके आते हैं, तो अपना फिटनेस देते हैं, उसके बाद वह जॉइन कर पाते हैं। तो इन सब प्रोसेस में जो मैम आपको जैसे अपने हायर ऑफिशियल से बात करनी है, किसी से बात करनी है, तो इन हुँ, सारे प्रोसेसेस में जो कम्युनिकेशन का सोर्स होगा, तो आप हुँ, कम्युनिकेट करती होंगी, तो मोस्टली या तो आप फ़ोन कॉल्स या मैसेजेस, फ़ोन यही कॉल्स आपके पास अभी फ़ोन जी, कॉल्स अवेलेबल होंगी। तो या फिर हम जैसे खुद कि जाके उनसे मिलें, 2 ऑप्शन है ओके, बस। ओके। हुँ, तो अगर इन सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया जाए एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म पे, जहाँ पे जी, आप अपनी लीव रिक्वेस्ट भी डाल सकती हैं, जिससे हुँ, अगर आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करें, तो आपको वो लीव रिक्वेस्ट दिखे, आप उसको वेरीफ़ाई करके फिर आगे वेरिफ़िकेशन के लिए भेज देंगे प्रिंसिपल के लिए। तो जी, पेपर वर्क भी आपका बचेगा, फिर आपको हुँ, टाइमिंग भी उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करनी नहीं होगी, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़नी होगी और फिर प्रिंसिपल मैम भी अपना उसको वेरीफ़ाई करके जो लीव रिक्वेस्ट है हाँ, उसको वेरीफ़ाई कर सकते जी। हैं। ओके। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और मैम क्योंकि ये डेडलाइन पे आपको अपने आप को पुश करना है, तो इस चीज़ की भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाती है कि उसमें एरर्स भी हो सकते हैं। जी, लाइक अगर आपकी बिल्कुल पूरी होंगे। हाँ, टीम इन्वॉल्व है, आप अपने साइड से ट्राई कर रही हैं कि आप अपने काम को बेस्ट तरीके से दें, बट आपको वेट करना होगा कि उस साइड से अप्रूवल आएगा तभी मैं काम को आगे बढ़ा सकती हूँ। बिल्कुल। तो ये ऑनलाइन अगर हम लोग इसको शिफ्ट करें और हम जी, लोग वेबसाइट में ही इस तरीके से कुछ ऑटोमेट कर दें जी। कि फॉर क्योंकि एग्ज़ाम्पल कभी-कभी हम लोग काम बहुत ज़्यादा होता है तो 1 या 2 एंट्रीज़ तो बहुत ध्यान से करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर काम खत्म करने के लिए उसको जल्दी करने लगते हैं। कभी-कभी ध्यान नहीं जाता है कि वहाँ पे लिखना क्या था। अगर मान लिया डेट ऑफ बर्थ डालनी है और हम जल्दी में उस कॉलम पे उस पे क्लिक कर दिए, नाम डाल दिए, तो अगर वहाँ पे आ जाएगा नहीं नाम नहीं डालना है, यहाँ पे आपको नंबर्स डालने हैं, तो हमें पता चलेगा ना हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अगर कुछ भी डालते रहेंगे वो गलत ले लेगा तो एरर तो आएँगे ही आएँगे। फिर हमारा काम डबल हो जाएगा। I am honored to have here today with me Dr. Renu Singh, who is a principal at Government Girls Inter College, GMO, Lucknow. How do you manage the staff and the students at your school? वी हैव सो मेनी स्टाफ्स, मतलब क्लर्कल स्टाफ है हमारे पास और बाकी चीज़ें हैं, तो हम मैन्युअली रजिस्टर मेंटेन करते हैं हर क्लास से अटेंडेंस जो आती है उसको कंपाइल करके पूरे डे का स्टूडेंट का अटेंडेंस का डेटा लेते हैं और जो लोग भी आते हैं वो अटेंडेंस एक रजिस्टर है टीचर्स का सिग्नेचर के लिए,
वहाँ से टीचर्स की अटेंडेंस मेंटेन करते हैं अच्छा. डेली बेसिस पे, और वो आते हैं और सिग्नेचर करते हैं, इस हिसाब से उनकी अटेंडेंस दे दी जाती है। Okay. Though I assume that this is a huge challenge for you. What are the specific problems that you face in this system? हाँ, ये एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी अटेंडेंस आ जाती है, कुछ टीचर्स कभी कभार सिग्नेचर करना भूल जाते हैं। वो हमारा एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वो अपनी अपनी क्लासेस के लिए मूव कर जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं उनकी सीएल लगा देती हूँ और वो बाद में पता चलता है कि वो आए हुए थे, है ना। या कई बार उस किसी और वजह से भी होता है, स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा होता है कि वो कुछ कभी कभार देर, गवर्नमेंट स्कूल है हमारा तो कभी कभार देर से आते हैं, तो उनके अटेंडेंस में भी वेरिएशंस देखने को मिलता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें बहुत अटेंटिव होके मैनेज करना पड़ता है, और बहुत मैन पावर लगती है, और बहुत फोकस होके इसको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट है कि अटेंडेंस वगैरह काफी सही होनी चाहिए इसके लेकर के। If you could think of something, just something that could improve your daily work responsibilities, or that could help you, what do you think that system could be? Something that could help you with administrative duties at least. आ, इसके लिए कोई ऐप हो सकता है, मे बी, है ना। या फिर कोई ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम स्कूलों का बनाया जा सकता है जिससे मतलब कुछ क्लिक के साथ ये काम हो सकता है, जिसके लिए एक्चुअली इतना मैन पावर और इतनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम उसको कहीं और अपनी मतलब एनर्जी को लगा सकते हैं बेटर वेज में, स्टूडेंट्स का भला करने के लिए, अगर हम ऐसा कोई सिस्टम डेवलप हमको मिल जाता है, हाँ, जिससे कि Mm-hmm. हम इन चीजों को मैनेज कर पाए इजिली 5 to 10 मिनट्स में, Correct. तो मेरे ख्याल से कोई ऐप हो सकता है ऐसा। Or and I also think all of this process of maintaining registers, and students must have also their mark sheets and all of their paperwork. Is there is it quite often that you have errors in this system? I mean, you did mention मोस्टली the मोस्टली CLS mark. मेनी टाइम्स हम मेरे क्लर्क्स जब भी हमारे पास कुछ लेके आते हैं, तो कई बार जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, उनको बहुत सारी चीजें एक साथ हैंडल करनी होती है, तो कभी कुछ चीजें गलत लिख देते हैं, कई चीजें तो बहुत मुझे भी फोकस करना पड़ता है कि मैं उसको वेरीफाई करती रहूँ। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जब बहुत सारा काम आ जाता है तो एरर्स हो जाते हैं। Okay. Ideally, if there were to be an app, how would your day look like using that app? If there were a centralized system, there was an app. Ideally, how would your day be using that particular centralized system? And it can have any features that you want. So what do you think? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब सबसे ज्यादा एज ए मतलब मुझे ऐसे लगता है टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके जो क्या होते हैं, लीड्स होते हैं, है ना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना। बच्चों के अटेंडेंस का जो इवेल्युएशन होता है, परसेंटेज वगैरह निकालना होता है, जिससे हम उनको ट्रैक कर सकें कि एक बच्चा कितने दिन स्कूल आता है ना। तो ऐसा कोई सिस्टम बन जाए जिसमें कि हम उसको प्रॉपरली परसेंटेज निकाल के और उसको चेक कर पाए, और फिर उसके बाद उसको हम एड्रेस कर पाए उसकी क्या प्रॉब्लम है, अगर वो किन किन स्पेशल डेज में स्कूल नहीं आता या किसी स्पेशल मंथ्स में स्कूल नहीं आता। और टीचर्स के लिए तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी कि उनको बार बार पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा। सपोज उसने किसी ने मेडिकल नहीं रखा है पहले, अगली बार वो मेडिकल लाता है, हम पिछला सारा लेखा जोखा उससे निकल सकते हैं कि नहीं ये भी फोटो स्टेट करके लाओ, ये भी बहुत बड़ा पेपर वर्क होता है। हम सब एक जगह देख लेंगे, है ना, कि अच्छा इतनी लीव है, इतनी हो गई है, इतनी और हो जाएगी, है ना। तो Correct. बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स, इतने छोटे समय में तो क्या क्या मैं डिस्कस करूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो। Okay. So hello, today we have Bishwajyoti with us. First of all, thank you for taking your time and joining with us today. So let's start with the first question. So I would like to understand, like, how do you currently assign your homework and track students' performances? Okay, first of all,
Thank you so much, Shiran, for inviting me here in this platform. Okay. As of now, in our college or in our student teaching learning process, we assign homework verbally or by writing it on a blackboard. The topics we teach. The first step is we teach the topics to the student. Then we give homework at the end of the class, and we at the next class we get the answer from them, and we suggest them if any wrong mistake they have done, and that's how we track them. Okay. 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 So moving toward the next question, Hmm. what difficulties you faced like when managing students' record and their attendance? So do you face any issue or any problem over there? Yes. While teaching a class, keeping records for attendance is a uh, takes takes lots of time. For a student, for a class of 50 students, on at max 10 minutes will go in recording attendance. For that, what we do? First of all, we take the attendance mostly at the last of the class, or else we give a piece of paper to the students, and they give their own rule numbers on it. And at the end of the class, we go to our chamber, we go to our cabin and note down the rule numbers in the registers. Okay, so the two problems that I am seeing is like one is like time issue, like Time consuming. Yeah, it's a time consuming it's. because it is not related to the topic that we will teach, first of all. Mhm. And so it will take some time. And Right. moreover, it will distract the student attention, student curiosity. Mhm. So that's why it is taken, attendance mostly is taken at the end of the class. Okay. Also, I find from the conversation like you after the class also you need to work on it Yes, and do the yes, paperwork. yes. So okay, so these 2 points I am noting down. So Okay. let's move to the next question. Yeah. So what tools would make it easier for you to communicate with student and manage assignments? So what are your thoughts on this? Like, do you use any tools to manage the assignments and all? Yeah, basically tools like on WhatsApp we use mainly the college faculties or administration, mostly while giving homeworks or any tasks to the students, we use WhatsApp. I think it is the best as of now. No other tools. WhatsApp is Okay. kind of, right? So since like most of the people like students are Yeah, available on WhatsApp, yeah. so Most of the students are available in WhatsApp, and is it Mhm. freely accessible? All the faculties Okay. also having WhatsApp. That's why it's quite good. So there is no dedicated like software or anything that you use for assignment, right? As of now. As of now, no, there is no such software or any website. They will give Okay. homework. Okay. Okay. So I'll note this point as well. Okay. Mm. So I have noted all the Mm. issues that you have been facing. So let's end this. So thank you so much for Mm. helping us and being there and giving your time over here. Yeah, So I would like to thank you once again. welcome.